Welcome back. We are looking to the chapter 15, Biodiversity and its conservation. As told previously, we are towards the end of this chapter, that is conservation of biodiversity. Now, a very important part is this last title, that is conservation of biodiversity. Every year you will find a question on methods of conservation of biodiversity. तो सर, आपली जी जीवविविधता आहे म्हणजे व्हरायटी ऑफ प्लांट, ॲनिमल, मायक्रोब स्पीसीज, याला आपण बायोडायव्हर्सिटी म्हणतो. आणि बायोडायव्हर्सिटीचं होते आहे, ती डिक्लाईन होते आहे म्हणजे जीवविविधता कमी होते आहे. त्याचे 4 कारणं आपण पाहिले: हॅबिटेट लॉस अँड फ्रॅगमेंटेशन, ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वेजन ऑफ एलन स्पीसीज आणि को एक्सटिंक्शन. हम लोगों ने ये भी देखा कि क्यों बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन आवश्यक है. सो नैरोली यूटिलिटेरियन रीजंस हमारे खुद के लिए, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजन दैट इज़ फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, एंड द थर्ड इज सम इथिकल ग्राउंड्स. नैतिकता के वजह से उसको हमने बचाना चाहिए. पण आत्ता आपल्याला पाहायचं आहे की ॲक्च्युली बायोडायव्हर्सिटी कशी प्रोटेक्ट करायची. तो पहिले मी 2 मिनटं तुम्हाला सांगून देतो. 2 प्रकारचे कन्झर्वेशन असतात: इन सिटू आणि एक्स सिटू. तो सर, इन सिटू कन्झर्वेशन, एक्स सिटू कन्झर्वेशन ह्या 2 मेथड आहे. तर इन सिटू म्हणजे काय? तो उनको अपने ही घर में, मतलब जहाँ वो रहते वहाँ पे प्रोटेक्ट करना, दैट इज इन अ नेचुरल हैबिटेट. जैसे शेर को जंगल में ही प्रोटेक्ट करना, दैट इज इन सिटू. एक्स सिटू माने उनको वहाँ से निकाल कर आर्टिफिशियली उनको जैसी चाहिए वैसी हैबिटेट बनाना, दैट इज आर्टिफिशियल हैबिटेट विच दे प्रेफर टू लिव. आत्ता इन सिटू आणि एक्स सिटूचे तुम्हाला विचारतात एक्झाम्पल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन सिटू कन्झर्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन सिटू कन्झर्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स सिटू कन्झर्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्स सिटू. तर मी तुम्हाला आत्ताच सांगतो. इन सिटूमध्ये नॅशनल पार्क, वाईल्ड लाईफ सँक्च्युरी, बायोस्फियर रिझर्व, किंवा सॅक्रेड ग्रूज. तो सर, नॅशनल पार्क म्हणजे राष्ट्रीय उद्यान. जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली मुंबई. तो ऐसे हिंदुस्तान में 90 नेशनल पार्क है. वाइल्ड लाईफ सँक्च्युरी म्हणजे अभयारण्य, जसं मेळघाट अभयारण्य, तो हिंदुस्तान में 448 है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज. बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हमारे देश में 14 है. सो 14 बायोस्फीयर रिझर्व, 448 वाईल्ड लाईफ सँक्च्युरी, 90 आहे नॅशनल पार्क आणि सॅक्रेड ग्रूज आहेत काही. तो सर, एक्स सिटू म्हणजे आर्टिफिशियल, जसं झूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन,
वाइल्डलाइफ सफारी, सीड बैंक, क्रायो प्रिझर्वेशन. सो त्यांच्या घरीच त्यांना प्रोटेक्ट करणं म्हणजे इन सिटू, आणि आपण त्यांच्यासाठी घर तयार करणं म्हणजे एक्स सिटू कन्झर्वेशन असतं. सो पहा, नॅशनल पार्क, वाईल्ड सँच्युरी, बायोस्फिअर रिझर्व, सॅक्रेड ग्रूव्ह हे सगळं झालं इन सिटू. झुलॉजिकल पार्क, बॉटॅनिकल गार्डन, वाईल्ड सफारी, सीड बँक, क्रायो प्रिझर्वेशन हे झालं सगळं एक्स सिटू कन्झर्वेशन. आत्ता अजून एक महत्त्वाची माहिती सांगतो, और वो नीट क्वेश्चन भी है. अगर कोई ये कहे कि इतनी बड़ी धरती है और यहाँ कहाँ कहाँ हम लोग प्राणी वनस्पति को प्रोटेक्ट करेंगे, तो देखो हर जगह प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती. ऐसे कुछ एरियाज है which are rich in biodiversity. So there are certain areas identified, असे काही क्षेत्र शोधले आहे which are rich in biodiversity. भले ही वो दुनिया के एरिया के 1% होंगे, पर वो 30% बायोडाइवर्सिटी वहाँ रहती है. तो हमें उन हॉटस्पॉट्स को बचाना चाहिए. तो सर मग असे जगात किती हॉटस्पॉट्स आहे? सो शुरुआत में तो 25 हॉटस्पॉट डिस्कवर किए गए और रिसेंटली उसमें 9 ऐड हो गए. तो नाउ द टोटल इज 34 हॉटस्पॉट्स. जैसे हिंदुस्तान में वेस्टर्न घाट, देन एरियाज ऑफ श्रीलंका और हिमालया, ईस्टर्न हिमालया, दॅट इज एंडोबर्मा रिजन. तो हे भारताचे हॉटस्पॉट्स आहेत. तो तुम्हाला लक्षात ठेवायचं, सध्या किती हॉटस्पॉट आहे जगात? 34. भारतात वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालया ॲटसेट्रा. सैक्रेड ग्रूव म्हणजे काय सर? सो लोगों की धारणा है कि जहाँ पर उनकी वन देवता बसती है, ऐसे वर्शिप्ड फॉरेस्ट जिनकी पूजा होती है, तो त्याला सैक्रेड ग्रूव म्हणतात. तो अब देखो हम लोग शुरू कर रहे. हाउ डू वी कन्झर्व बायोडायव्हर्सिटी? आपण जीव विविधता कशी प्रोटेक्ट करायची? वेन वी कन्झर्व अँड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, वेन वी कन्झर्व अँड प्रोटेक्ट होल इकोसिस्टम माने हर्ब, shrub, tree, climber, all kinds of animal. So whole ecosystem, when you conserve or protect, its biodiversity at all level is protected. We save entire forest to save the tiger. तो सर टाइगर को बचाने के लिए पूरे फॉरेस्ट को बचाना, ये हमारा तरीका हो सकता है, जिसको इन सिटू कहेंगे. When we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at all levels is protected. We save the entire forest to save the tiger. This approach is called in situ, म्हणजे on-site conservation. But when there are situations where animal or plant is endangered or threatened, that is organism facing high risk of extinction in wild in near future, त्याला आपण threatened किंवा endangered म्हणतो.
तो ऐसा अगर कोई एक प्राणी है या एक पौधा है तो फिर पूरे जंगल को प्रोटेक्ट करना संभव नहीं है. So however, when there is situation where an animal or plant is endangered or threatened and needs urgent measure उपाय to save it from extinction, then ex situ म्हणजे ऑफ द साइट कंजर्वेशन इज डिज़ायरेबल अप्रोच. तो मैंने आपको पहले बताया कि क्या है इन सिटू, क्या है एक्स सिटू. तो नंबर 1 इन सिटू कंजर्वेशन. अब देखो, आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लेने हैं पेज पे या आपकी खुद की किताब में अंडरलाइन करना है, उनको छोड़ना नहीं. तो सुनो, इन सिटू कंजर्वेशन म्हणजे त्यांच्या घरी त्यांना प्रोटेक्ट करणे जंगलात. फेस्ड विथ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेव्हलपमेंट अँड कंजर्वेशन म्हणजे द्विधा मनस्थिती आहे की विकास की निसर्ग वाचवायला पाहिजे. मतलब एक द्विधा मनस्थिति है, डायलेमा है कि अगर हम डेवलपमेंट चाहते तो कुदरत को हानि होगी और कुदरत बचाते हैं तो डेवलपमेंट नहीं हो सकती. सो दैट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट. सो फेस्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, मेनी नेशन फाइंड इट अनरियलिस्टिक, इकोनॉमिकली नॉट फिजिबल to conserve all the biological wealth. So विकास करावा की नेचर वाचवावं, या कॉन्फ्लिक्टमध्ये काही देशांचं म्हणणं आहे की त्यांना हे अनरियालिस्टिक आणि इकॉनॉमिकली पॉसिबल नाही वाटत टू कन्झर्व ऑल द बायोलॉजिकल वेल्थ. म्हणजे पूर्ण देशात एकही झाड कापायचं नाही, एकही प्राणी मारायचा नाही, रस्ते टाकायचे नाही, रोड टाकायचे नाही, मायनिंग ॲक्टिव्हिटीज, असं नाही आम्हाला शक्य. सो फेस्ड विथ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेव्हलपमेंट अँड कन्झर्वेशन, मेनी नेशन फाइंड इट अनरियलिस्टिक अँड इकॉनॉमिकली नॉट फिजिबल टू कन्झर्व ऑल बायोलॉजिकल वेल्थ. मग आता करायचं काय? तो कुछ तो ढूंढो ऐसे रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, कम से कम उसको बचाओ. इनवैरिएबली नंबर ऑफ स्पीसीज वेटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन फार एक्सीड द कंजर्वेशन रिसोर्सेस अवेलेबल. म्हणजे याच्यात काही डाऊटच नाही की इतक्या साऱ्या प्लांट ॲनिमल स्पीसीजला धोका आहे, एक्सटिंक्ट होऊ शकतात, की त्यांना वाचवण्यासाठी कोण्या देशाकडे तेवढे रिसोर्सेसही नसतील. मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ को एक्सटिंक्शन का डर है और इनको बचाना संभव भी नहीं है, उतने रिसोर्सेस नहीं है. ऑन ग्लोबल बेसिस दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय इमिनंट कंजर्वेशनिस्ट. तो ही जी अडचण आहे की कसं करायचं, मग विकास कसा साधायचा, नेचर कसं वाचवायचं, तर जे इमिनंट कंजर्वेशनिस्ट आहे त्यांनी उपाय सांगितला. दे आयडेंटिफाईड फॉर मॅक्झिमम प्रोटेक्शन सर्टन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. किती आहे सर? पहले 25 थे, बाद में 9 जुड़े, 34 है. सो दे आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट region with very high level of species richness and high degree of endemism. तो आता ही तुम्ही पहिली लाईन लिहाल की जे कोणी असतात बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट, वहाँ हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस है और वहाँ हाई डिग्री ऑफ एंडमिझम है. सर एंडमिझम म्हणजे? बघा आता मी सांगतो तुम्हाला. जैसे what is endangered species, what is
extinct species. What is vulnerable species? What is indeterminate species? What is endemic species? तो सर पहला तो मुझे पता है कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज माने जो अब धरती से नष्ट हो गई, जैसे स्टीलर सी काऊ, पैसेंजर पिजन, डोडो ऑफ मॉरिशस, क्वागा इन आफ्रिका. तो त्यांना आपण एक्सटिंक्ट स्पीसीज म्हणतो. सर एंडेंजर्ड म्हणजे अगर आपने ध्यान नहीं दिया, इनकी तादाद इतनी कम है, द स्पीसीज हुज नंबर हैज़ बीन ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड एंड इफ द कॉजल फॅक्टर कंटिन्यूड दे विल बिकेम एक्सटिंक्ट. त्यांना एंडेंजर्ड स्पीसीज म्हणतात, माने वो कतार पे खड़े हैं एक्सटिंक्शन के. वल्नरेबल स्पीसीज माने मतलब देयर नंबर इज आल्सो रिड्यूस, उनकी संख्या भी घट गई है, पर अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया तो वो एक्सटिंक्ट नहीं होंगे, बल्कि वो अब एंडेंजर्ड होंगे. और फिर अगर वो एंडेंजर्ड हो गए तो वो कल को एक्सटिंक्ट हो सकते. म्हणजे पेशंट सिरियस नाही आहे, पण पेशंटवर लक्ष नाही दिलं तर तो सिरियस होऊ शकतो. सर इनडिटर्मिनेट स्पीसीज माने मतलब उनका डाटा हमारे पास पर्याप्त नहीं है. हमें नहीं पता है कि वो वल्नरेबल है, वो एंडेंजर्ड है, तो उनको इनडिटर्मिनेट कैटेगरी में रखते. एंडेमिक स्पीसीज म्हणजे इट इज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया ओनली, नॉट एल्सवेयर. हा नीट क्वेश्चन आहे बरं. सो एंडेमिक स्पीसीज मीन्स द स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया ओनली, नॉट एल्सवेयर. सर ध्यान में रखने के लिए एग्जाम्पल तो सुनो. कांगारू सिर्फ कहाँ है? सर ऑस्ट्रेलिया, तो दैट इज अ एंडेमिक स्पीसीज. चिखलदरा में फ्लाइंग स्क्विरल है, म्हणजे उडणारी खार, ती कुठेच नाही, तो दैट इज एंडेमिक स्पीसीज. सर ये रेयर स्पीसीज क्या रहती? तो रेयर स्पीसीज म्हणजे हुज नंबर इज वेरी मच रिड्यूस, या फ्यू है, वो ऑलरेडी फ्यू है. सो द स्पीसीज हुज नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर वेरी फ्यू एंड दे लिव इन अनयुजुअल हॅबिटॅट्स. म्हणजे अशी स्पीसीज ज्याची संख्या पहिलेच तर कमी आहे आणि ते स्कॅटर्ड राहतात जगात इकडे तिकडे इन हार्श इन्व्हायरमेंट, त्यांना रेअर स्पीसीज म्हणतात. जैसे मस्क डियर म्हणजे अँटीलोप, कस्तुरी मृग, जैसे सांबर हिरन, तो ये रेयर स्पीसीज में आती है. तो आपण पाहतो आहे इन सिटू कन्झर्वेशन. Faced with the conflict between development and conservation, many nations find it unrealistic, economically not feasible to conserve all the biological wealth. Invariably, number of species waiting to be saved from extinction far exceed the conservation resources available. On global basis, this problem has been addressed by eminent conservationists. They identified for maximum protection certain biodiversity hotspot, जे 34 आहे. So they identified for maximum protection certain biodiversity hotspot region with very high degree of species richness.
सो हॉटस्पॉटचे कॅरेक्टर विचारतात बरं. म्हणजे तिथे काय असते, पहिले तर स्पीसीज रिचनेस, खूप जास्त स्पीसीज असतात. हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, मतलब वो स्पीसीज सिर्फ वहीं पाई जाती, दूसरी तरफ नहीं. सो हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, एंडेमिज्म म्हणजे दॅट इज द स्पीसीज कन्फाइंड, लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड टू दॅट रिजन अँड नॉट फाउंड एल्सवेअर. Initially, 25 biodiversity hotspot identified, but later on 9 more have been added to the list. So 25 पहले थे, अब 9 ऐड हो गए. So bringing the total number of biodiversity hotspot to the 34. नीट क्वेश्चन लिहा. काय लिहिणार आहे? बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉटचं पहिलं कॅरेक्टर हाय लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, दुसरं हाय डिग्री ऑफ एंडेमिझम, तिसरं एंडेमिझम म्हणजे द स्पीसीज फाइंड इन पर्टिकुलर एरिया नॉट फाउंड एल्सवेयर, चौथा तो पहले 25 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट थे, उसमें 9 जुड़ गए तो अब टोटल हो गए 34. दीज हॉटस्पॉट्स आर आल्सो रीजन ऑफ ॲक्सलरेटेड हॅबिटॅट लॉस. पहा तिसरं कॅरेक्टर, हाय लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस असते तिथे, हाय डिग्री ऑफ एंडेमिझम असते आणि तिथेच असते ॲक्सलरेटेड हॅबिटॅट लॉस, म्हणजे जंगल कटाई भी वहीं पे चालू है. द 3 ऑफ दीज हॉटस्पॉट, 34 में से 3, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालया cover our country's exceptionally high biodiversity region. मग भारताचे कोणते आहे? वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा अँड हिमालया. Although all biodiversity hotspot put together cover only 2% of the Earth's area. तो 34 हॉटस्पॉट का एरिया केवल 2% है दुनिया के. But the number of species they collectively harbor the number of species they collectively harbor is extremely high, and if strict protection is given to this hotspot, you could reduce the ongoing mass extinction by 30%. In India, ecologically unique biodiversity rich regions are legally protected as Biosphere Reserve, National Park आणि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो इन सिटू में कितने हैं? 3. बायोस्फियर रिझर्व जे आपल्याकडे 14 आहे, नॅशनल पार्क 90 है, सँक्चुरीज 448. इन इंडिया नाउ हैज़ 14 बायोस्फियर रिझर्व, लिख लो, 90 नॅशनल पार्क अँड 448 वाइल्ड लाइफ सँक्चुरीज. हे विचारतात. India has also a history of religious and cultural tradition that emphasize protection of the nature. So हिंदुस्तान के पास इतिहास है कि धर्म के लिए, संस्कृति के लिए हम लोग कुदरत को बचाते हैं. In many culture, tract of forest are set aside, and all the trees and wildlife within are venerated and given total protection. So बहुत सारी ऐसी संस्कृतियाँ हैं हिंदुस्तान में लोगों की जो जंगलों के आसपास रहते और उस जंगल के वृक्ष को और प्राणियों को पूजते हैं, उनकी रक्षा करते. Such sacred groves, worshipped forest, are found in Ataliha, Khasi and Jaintia in Meghalaya.
सो खासी अँड जैनशिया कुठे आहे? मेघालय. अरवली राजस्थान. वेस्टर्न घाट कर्नाटक अँड महाराष्ट्र. सो खासी जैनशिया मेघालय, अरवली हिल राजस्थान, वेस्टर्न घाट regions of Karnataka and Maharashtra. सरगुजा, चंदा, बत्सर of Madhya Pradesh. सरगुजा, चंदा, बत्सर, मध्य प्रदेश. In Meghalaya, the sacred groves are the last refuge of large number of rare and threatened plant. सो मेघालयामध्ये जे सॅक्रेड ग्रूव्ज आहेत तिथंच फक्त आता बिचाऱ्या प्राणी आणि वनस्पती त्यांनी टिकून ठेवले आहे. तर तुम्हाला सॅक्रेड ग्रूव्ह कोणतं कुठं आहे माहीत पाहिजे बरं. तो जैसे खासी जैनशिया मेघालय, अरवली राजस्थान, वेस्टर्न घाट कर्नाटक महाराष्ट्र, सरगुजा चंदा बत्सर MP. नाउ एक्सिटू कंजर्वेशन म्हणजे उनके लिए आर्टिफिशियल हैबिटेट बना के कंजर्व करना. तो त्याचे मी जे एग्जाम्पल सांगितले ते कोणते आहे? सर आपने बताया झूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी, सीड बैंक एट्सेट्रा. सो ex situ conservation. In this approach, threatened animals and plants are taken care of. So they are first taken out from their natural habitat, जंगलों से उनको निकालो, and placed in special setting where they can be protected and given special care. Number 1 zoological park, 2 botanical garden, 3 wildlife safari park. सर दिस पर्पज लक्षात ठेवा, लिहून घ्या. एक्सिटूमध्ये काय येतं? झुलॉजिकल पार्क, बॉटॅनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क. देर आर मेनी एनिमल दैट हैव बिकेम एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड. बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो कुदरत में अब नहीं मिलते, मर गए वो सब के सब, बट कंटिन्यू टू बी देअर ॲट झुलॉजिकल पार्क. तिथं ते आपण सांभाळून ठेवले. इन रिसेंट इयर एक्सिटू कंजर्वेशन हॅज ॲडव्हान्स्ड बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटन्ड स्पीसीज इन एन्क्लोजर. तो आत्ता एक्सिटू कंझर्वेशन इतकं ॲडव्हान्स झालं की ज्या थ्रेटन्ड स्पीसीज आहेत त्यांना असं काही एन्क्लोजरमध्ये प्रोटेक्टेड एरियात ठेवायचं काम नाही. मग उनके एग्स, उनके स्पर्म्स, उनके एम्ब्रियोज, उनके सीड्स, उनके प्रोपैग्यूल -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन में रखते उसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहा गया है. In recent year, ex situ conservation has advanced beyond keeping threatened species in enclosure. Now, gametes of threatened species can be preserved in viable and fertile condition for long period using cryopreservation technique. Eggs can be fertilized in vitro. Plants can be propagated using tissue culture. So cryopreservation is also ex situ method. Seed of different genetic strain of commercially important plant can be kept for long time in seed bank. तो zoological park, botanical garden, wildlife safari, cryopreservation technique आणि सीड बैंक, ये सारे एक्स सिटू है. ये क्रायो प्रिजर्वेशन पे भी क्वेश्चन था, इसको भी लिख लो. अब ये जो आखिरी लाइन है वहाँ से 2 बार क्वेश्चन है. देखो अब, बायोडायव्हर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज. म्हणजे जीव विविधता याला काही राजकारण नसतं. अँड इट्स कन्झर्वेशन इज देअरफॉर अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल नेशन. कि ये बायोडाइवर्सिटी पाकिस्तान की है, ये चाइना की, ये हिंदुस्तान की, ये यूके की, ये यूएस की, ऐसा नहीं. इट हैज़ नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड डिस्क्रिमिनेशन. अब ये लिख लो, द हिस्टोरिक कन्वेंशन
ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। द अर्थ समिट, ये पूछा नीट में। द अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरो। कुठं आहे रियो डी जेनेरो? ब्राझील. सो अर्थ समिट कुठे झाली होती? रियो डी जेनेरो, ब्राझीलमध्ये 1992. ये लाइन लिख लो भैया. The historic convention of biological diversity, the Earth Summit, held in Rio de Janeiro in 1992, called upon all nations to take appropriate measure for conservation of biodiversity and sustainable utilization of benefit. तो अर्थ समिटमध्ये कोणता डिसीजन पास केला कि आप उचित तरीके अपनाओ बायोडाइवर्सिटी को बचाने और उनके उपयोग ऐसे लीजिए कि वो तबाह ना हो। इन अ फॉलोअप, माने 1992 में द अर्थ समिट हुई, उसके 10 साल बाद द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, माने डेवलपमेंट ऐसी हो जो सस्टेनेबल हो, हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। 190 कंट्रीज प्लेज्ड, उन्होंने वहाँ पे प्रतिज्ञा ली, फॉर देयर कमिटमेंट टू अचीव बाय 2010 सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन करंट रेट ऑफ बायोडायव्हर्सिटी लॉस ॲट अ ग्लोबल, रिजनल अँड लोकल लेवल। तो तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की अर्थ समिट कुठे झाली? रियो डी जेनेरोमध्ये 1992ला, आणि वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट झाली 2002मध्ये जोहान्सबर्गला, आणि त्याच्यात 190 कंट्रीजने कौन सी प्रतिज्ञा ली कि 2010 तक हम जो बायोडाइवर्सिटी लॉस ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे हो रहा है उसका रिडक्शन करके दिखाएंगे। तो मेरी आपसे विनती है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने जितने पॉइंट्स बताए वो पेज पे लिखो, हार्डली 2 पेज पे आ जाएंगे, उसमें से क्वेश्चन आएंगे और उसको रट लो। थेरॉटिकल चॅप्टर्स आहे हे बोर्डावर कसे शिकवायचे, तो आपको नोटिस डाल के मैं बताऊंगा कि इसकी टेस्ट कब होगी। थैंक यू।